Hello, everybody. मैं recently Las Vegas में थी, and this is a video of me getting ready for a fancy tea place. So सबसे पहले मैं अपने face पे Benefit का Professional Primer लगा रही हूँ. I have some large pores on my face, so I feel like primer is my new love that I really just started wearing. और इसको मैं हाथ से ही अपने फेस पे मसाज कर लेती हूँ. I feel like जो आपके fingers हैं, they really get into your pores, जो कि ज़रूरी है जब आप primer यूज़ करते हैं. जो product है, it needs to seep into your skin. Next, I'm wearing foundation. ये Wet n Wild का coverall foundation है, जो मैं इसके पहले भी किसी वीडियो पे दिखा चुकी हूँ as my top most used products of 2019. So मैं सिर्फ इसको अपने face पे few dots लगा रही हूँ. You don't need too much foundation. Especially अगर आपकी थोड़ी textured skin है, आपकी skin पे pores नजर आते हैं, do not wear too much foundation, because I discovered the hard way that the more foundation and the more products you use on your face, आपका texture और ज़्यादा enhanced दिखने लगता है skin पे. So I avoid doing that. ये मैं अपनी cousin से बातें कर रही थी. They were in the same room, so I did not want to talk and disturb them while I was doing this video. So I decided to just do a voiceover. And I was talking and having fun with them at the same time, as you can see. And guys, मैंने ये बाद में realize किया that I should have been facing towards the light and not against the light. लेकिन view इतना गजब का था वहाँ पे कि मुझे लगा वीडियो में view नजर आए तो अच्छा रहेगा, but वो exposure इतना अजीब सा है मेरे phone पे that you don't even see the view that nicely, but it's okay. We are going to work with that. Did I already put the concealer? Okay, so I put some concealer. This is the NYX concealer. Nothing that great about this concealer. I just have some and I want to use it up. अब मैं elf का powder लगा रही हूँ, जो oh my gosh, okay. I spilled some of it. So I don't know ये और लोगों के साथ होता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं मेकअप लेती हूँ और मेरा सही मैच नहीं है complexion का, या it doesn't suit me for some reason, but I still like to use it up. चाहे कलर सही लग रहा है या नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती हूँ उसको यूज करने के लिए. I don't know if I'm the only one, but I do that, and I know it's not ideal, but I hate wasting things, not just makeup, but मुझे कोई भी चीज waste करना बहुत irritating लगता है. So that's that. So मैं ये powder अपने face पे makeup set करने के लिए यूज कर रही हूँ, एक big fluffy brush लेके. और अब मैं कुछ ढूंढ रही हूँ. I don't know मैं क्या ढूंढ रही हूँ. Later. Okay, blush time. Tarte blush again. मेरे most used makeup products में ये भी था. I will link that video down below. अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. Blush बहुत light blush है, not too much. I was going for a daytime event, so मैं बहुत हल्का मेकअप कर रही हूँ, very natural makeup. अब आईज की बारी, इसलिए मैंने zoom in कर दिया आप लोगों को ताकि आप देख सकें. I'm using my Wet n Wild eyeshadow palette. इसका मैं जो crease color है वो यूज कर रही हूँ on my crease. Guys, ये मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने cousin से बात कर रही हूँ. crease के ऊपर lightly मैंने ये crease shade लगा लिया है. Just use any color that's a little darker than your skin.
Wow. I am having a good time, aren't I? With a flat brush. And my friend's calling me, so I'm gonna pause you. So next I'm gonna take this peachy shimmery shade, और इसको मैं अपने lid के ऊपर लगाऊंगी. You see how just जो crease color हमने लगाया उसके नीचे से and then पूरी lid में up to the corners and the ends or edges of your eyes, पूरी lid पे ये shimmery shade लगा रही हूँ. इससे क्या होता है आपकी आँखें ज़रा खुल जाती हैं. They look a little brighter, a little bigger, just more opened up. Again, this is like an everyday eye look that you can do. Next, I'm using this dark brown. It's like a shimmery brown shade, और इसको मैं outer corner में लगा रही हूँ. Like outer V. Just आँखों का. Well, you know what I'm doing. You are seeing the video. Just the outer V's. A nice dark brown. You can do a dark burgundy. You can do a black. You can do a navy, purple, anything that's a little darker. But क्योंकि मैं brown पहने थी तो मैं चाह रही थी कि मैं पूरा look उसके around करूँ. So I wanted my eyes to be brown. So I'm using that nice shade of dark chocolate brown. Okay, zoomed out. Next, highlighter. ये है Mary Luminizer highlighter. ये बहुत natural highlighter है. इसको अगर आप wet लगाएंगे तो वो थोड़ा और ज़्यादा, कोई भी highlighter अगर आप wet लगाएंगे तो और pop करेगा. Personally, मुझे थोड़े light highlighters पसंद है. I don't like to look like a disco ball. तो इसको मैं अपनी bridge of the nose पे लगाऊंगी. And over there, like my cheekbone और brow के पास वाला area. With a nice fluffy brush. Brow bone, cheekbone. Like basically a C on my Cupid's bow. Oh yeah, मैं अपने dry crusty lips देख के मुँह बना रही थी. Yeah, we will take care of that in a bit. Keep watching. ये हो गया आपका highlighter. And then मैं अपनी pinky finger से थोड़ा सा highlighter लेके उसको अपने corner of the eyes पे लगाऊंगी. This really opens up your eyes, guys. अगर आप eye makeup नहीं भी कर रहे हैं, I would recommend आप थोड़ा सा ये अगर अपनी eyes के corner पे लगा लेंगे, like a nice highlighter, it will give you a nice pop. Next is lip exfoliator, because obviously मैंने अभी अपने dry crusty lips देखे और मैं उसको exfoliate करूँगी. It's just that. So I got this lip exfoliator from Elf, and it's really nice, and you should get it too. या फिर आप sugar powder oil के साथ mix करके अपने lips पे लगा सकते हैं. You can do that as well if you have dry lips. And then you just wipe that off. Next, I'm using this NYX lip stain. It's a nice, again, brown color going with the theme of brown. I personally love brown makeup. I love brown makeup more than black makeup. Like, as in brown eyeshadows as compared to this dark black smoky eyes. Next, I'm using this Kush mascara. Milk Cosmetics Kush mascara. Eyelashes पे मैंने एक शादी में किसी को देखा था. I don't know वो भूल गई थी कि क्या था, but she had like white eyelashes, and it's not like it wasn't a health issue, but I think वो उसने अपने हाथों पे क्रीम की तरह फाउंडेशन लेके पूरे मुंह पे रगड़ दिया होगा, and her eyelashes were white. Unless you're going for that look, I would suggest please make sure
आप मेकअप करने के बाद मस्कारा लगा के अपनी eyelashes वापस black कर लें, because white eyelashes is not the look that we are going for. Next, I'm using this Wet n Wild eyebrow pencil. Again, जैसा फाउंडेशन और बाकी मेकअप के साथ होता है sometimes, वो आपकी eyebrows पे eyelashes पे आ जाता है, तो mostly I just use that ताकि मेरी eyebrows वापस से black हो जाएं. Okay, now time to contour. मैंने कोई स्पेशल ब्रॉन्जर नहीं यूज किया इस लुक के लिए. मैं वही अपना एल्फ कह रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ. उसमें जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर था उससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने चीक्स पे, अपने नोज के एजेस पे, एंड देन मैं वो फ्लफी पाउडर ब्रश बाय एल्फ लेके उसको ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज आपको हार्श लकीरें नहीं चाहिए अपने फेस पे. यू वांट टू ब्लेंड एवरीथिंग आउट. ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया था ताकि आपको ज़्यादा देखना ना पड़े, बट बेसिकली आई जस्ट ब्लेंड इट आउट ताकि मेरे फेस पे डार्क लाइंस ना दिखे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कवर एफेक्ट्स सेटिंग स्प्रे. ये मैंने पहली बार यूज़ किया था उस दिन, एंड इट्स beautiful, guys. It has this nice like a pearl inside it. जिसको आप शेक करते हैं तो उसमें एक अच्छी सी कुछ ingredient है, which I'm not sure what ingredient it is. I'll look it up. But there's something that mixes with the setting spray, and it gives your skin a very nice, like a nice dewy look. Oh, that's my makeup bag that a friend of mine got for me from Kerala, and I love it. The bracelet was also a gift from my friend from Turkey, and this is the finished look. Yeah, see, it looks so much better now that I'm facing the window as opposed to against the window. But ये जब मैंने turn किया तो realize किया कि ये गलत हो गया. But it took me 17 minutes to film this video, so I'm going to use it. ये मैं ज़रा कैमरा के सामने इतरा रही हूँ. And this is the beautiful view from my window. I hope you guys liked this video. If you did, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. And you can leave me some video requests if you want to see something special. I will see you guys in my next video. Bye.